Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Numan. I welcome you all to this new series of Intercom 2000. We started Intercom 2000 to improve your four skills such as listening skill, reading skill, writing skill, and speaking skill. In this book, we will talk about these four skills. Till now, we have taken 5 classes about this. In the previous class, I talked about the pronoun. What does it mean? A pronoun. Pronoun is basically the combination of two words. Two words. It is composed of two words. Pro and noun. Pro means instead of. Noun means it's the name of a person, place, thing, and animal. So it means a pronoun is a word which is used instead of a noun to avoid the repetition. We use there the word pronoun. We have 7 pronouns: he, she, it, I, you, we, they. We have these 7 pronouns. In the previous class, I talked about each and every pronoun separately and individually. I hope you would have learned that in the detail. There is no complexity. In today's lecture, we will talk about, first, as I talked about in the previous classes, we have to know these points. First, we have to know these points. Then we will do different activities in this book. Different dialogues, activities must be done. Remember this point. You may be thinking that why he is talking about grammar. Only he is talking about grammar in this book. Not at all, my brothers, my students, my dear students. I'm not just talking about grammar. But first, we have to know what will be used in this unit. First, we have to know these points: grammar, subject pronouns, demonstrative pronouns, be verbs, and indefinite articles. Whenever we learn these points, then see yourself how much you are in the water. Then we will do these different kind of activities. Right? Then we will talk about welcome to Winfield, the name of first unit, greeting and introduction, how we will introduce ourselves, how we will greet someone, the contraction forms, how we will talk about the demonstrative pronouns over here. Then we will talk about A and N, right? We will talk about vowels, we will talk about consonants. Okay, when we can use A, when we can use N, what are the rules and regulation of these articles? Inshallah, we will talk about this. And we will also talk about different activities which are given here. Then we will also make some questions. How you will know the name of a person, how you will know the name, the occupation of someone, right? We will make some questions here. In today's lecture, let's talk about the word subject, right? Subject. First, we have to know this word.
सब्जेक्ट मीन्स उर्दू में इसको हम कहते हैं फाइल, ठीक है ना, जो काम करता है, काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी डिफाइन इट डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन, subject definition, it is the doer of an action. The doer, D-O-E-R, the doer of an action. The doer of an action is called what? That is called subject. काम करने वाला, जो बंदा, जो आदमी, जो शख्स, जो चीज कोई काम करता है ना, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। दिस इज वन ऑफ द simplest definition ever. Remember this point. The doer of an action only for what's out there. Don't worry about this definition, my students, my dear students. Don't worry about this definition here. The doer of an action, काम करने वाला, ठीक है। एक्शन, काम करना, ठीक है। The doer of an action is called the subject. For example, let's talk about some examples. Example, he is, which is a pronoun. He is playing. He is playing cricket. Simple examples on here. He is playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहा है। ही जो है ना हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्योंकि जो काम हो रहा है ना, वो किसके जरिए हो रहा है? वो हो रहा है ही के जरिए। इस तरह इसको हम कहते हैं, ही को हम कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला। He is playing, and this present continuous tense, right? Present continuous sentence. This is the action which is being happened right now. जो काम इस ही वक्त वाक़ हो रहा होना, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट continuous tense. आप देख सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं आप। ये है इसका फार्मूला। फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा हेल्पिंग वर्ड, देन आएगा मेन वर्ड, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, फार्मूला। इंशाल्लाह whenever this tense comes, we will talk about this tense in the detail. In which situation we can use the present continuous tense, कौन सी हालत में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहां पर और इस बुक में है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। रिमेंबर दिस पॉइंट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है ना हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ड है, ये मेन वर्ड है, और ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड, ये है मेन वर्ड, ठीक है, और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम को वसूल करने वाला, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर जो है ना ही, इसको हम कहते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। आप समझ गए? डिड यू गेट माय पॉइंट्स? ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, जीनियस स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर यू। Another example, Ali recites the Holy Quran. Ali recites the Holy Quran. अली जो है ना वो कुरान की तिलावत कर रहा, वो कुरान की तिलावत करता है। ये है जो है ना हमारे पास, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेन वर्ब के साथ एस या एस जो है ना वो लगेगा, ठीक है। ये है फार्मूला इसका। अली रिसाइट्स द होली कुरान, तो यहां पर जो है अली जो है ना वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अमल जो हो रहा है ना, रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान, ये अली के जरिए हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना।
इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अली रिसाइट्स द होली कुरान। इस तरह आप भी एक एग्जांपल जो है इस पे जरूर बनाइए। अली रिसाइट्स द होली सब्जेक्ट पे, ठीक है। अली रिसाइट्स द होली कुरान, ये हमारे पास मेन वर्ड, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे अमल को रिसीव करना है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अली रिसाइट्स द होली कुरान, अली जो है वो कुरान की तिलावत करता है। तो यहां पर जो है ये अमल जो आ रहा है, द डूर ऑफ एक्शन, वो है कौन है? वो अली है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से हियर आई विल go to पेशावर, मैं पेशावर को जाऊंगा। I will go to पेशावर, मैं पेशावर को जाऊंगा। तो ये है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। Remember this point. Whenever will comes, so it shows that the action will be happened, the action will be done, the action will be taking the place, the action will take the place in the future. ये अमल जो होगा ये फ्यूचर मुस्तकबिल में होगा, इसको हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट? दिस इज द रिकॉग्निशन, ये इसका पहचान है। अपने जहन में ये बात जो है ना बता देना, ठीक है? रखना। तो ये चंद एग्जांपल हमने दिए। अब ओके, जिस तरह हमने बात की सब्जेक्ट, द डूर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? दे सब्जेक्ट, दे स्पीक इंग्लिश। दे स्पीक व्हाट? दे स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलते हैं। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। दे स्पीक, ये काम जो हो रहा है ना, ये किसके जरिए होता है? ये जो है दे के जरिए होता है। इसको हम कहते हैं द डूर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, सब्जेक्ट। अब मैं एक और बात कर रहा हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है? she goes to where? She goes to market. She goes to market. वो मार्केट को जाती है, वो मार्केट को जाती है। she जो है ना, ये हमारे पास क्या है? ये भी एक सब्जेक्ट है। और यहां पर ये जो है ना, the action is performed by this girl, she, by her. इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल इट के मुताबिक, इट राइट्स वेल। ये जो है ना अच्छा लिखता है, ये अच्छा लिखता है, ठीक है? ये अच्छा लिखता है। इट राइट्स वेल, इसकी लिखाई अच्छी है, ये अच्छा लिखता है। ये जो है ये मार्कर, ये अच्छा लिखता है। तो यहां पर एक जो है ना एग्जाम्पल है इसका। It, for example, we are talking about a car. It goes fast. It goes fast. तो यहां पर एक जो है ना, ये कार को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने कार के बजाय जो है ना ये प्रोनाउन लगा दिया। तो यहां पर एक जो है ना, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, द डूर ऑफ एन एक्शन। लेकिन यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसके मुताबिक बात करते हैं, ठीक है? हमने जाना द डूर ऑफ एन एक्शन, और मैंने आपको मिसालें भी दे दी। द डूर ऑफ एन एक्शन काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन बहुत ज्यादा सेंटेंसेस ऐसे भी हैं
जिसमें कोई एक्शन, कोई अमल नहीं होता। तो हम किस तरह कह सकते हैं द डोर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, he is in नौशहरा, वो नौशहरा में है। और another example, he is fine, वो ठीक है। he is fine, he is in नौशहरा, he is fine. Now I am asking you question. Is there any action available? Think for a while, then answer that. He is in Nashra. As we learned, the door of an action, काम करने वाला, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सवाल यही पैदा होता है, कंफ्यूजन क्रिएट्स होता है कि he is in Nashra, he is fine, he is okay, he is good, he is intelligent. तो यहां पर कोई काम हो रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, यहां पर कोई अमल या काम वाकया नहीं हो रहा। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस की बात, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं और यहां पर हम कंडीशन के मुताबिक बात कर रहे हैं। यहां पर कोई अमल, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस, किसी की मौजूदगी या किसी की हालत के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने तो डिफाइन किया था डोर ऑफ एन एक्शन। नो द कंफ्यूजन क्रिएट्स, यहां पर उलझन पैदा होती है, ठीक है ना, यहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है और आपको लोग कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना, आपको लोग मिसलीड करेंगे। क्यों? वो आपको इस तरह के सेंटेंसेस बताएंगे कि आपने बता दिया कि द डोर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, तो यहां पर कोई काम तो नहीं हो रहा। किस तरह आप डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट को, द डोर ऑफ एन एक्शन? Here we are talking about the existence and here we are talking about the condition. What will be the complete definition? Although that definition is also correct, I'm not talking about that definition is incomplete or wrong. Thus that definition is also correct. But to some extent, किसी हद तक ये डिफिनेशन जो है ना, ये सही है। बहुत ज्यादा जुमले ऐसे होते हैं ना, वहां पर ये डिफिनेशन इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर हम सिर्फ कंडीशन, आवर एग्जिस्टेंस, किसी की मौजूदगी या किसी की हालत के बारे में बात करते हैं ना, वहां पर एक्शन नहीं होता। तो बहुत सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर कोई अमल नहीं हो रहा। तो किस तरह हम इसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट को? So let's talk about the complete definition. Now we have to talk about the complete definition. Now look at here. The part of the sentence about what or whom, the part of the sentence about what or whom we are talking
talking about in a sentence, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ये है कंप्लीट डिफिनेशन सब्जेक्ट का। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का वो हिस्सा जिसके मुतालिक, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट व्हाट और हु, जब भी हम किसी चीज या किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट व्हाट और whom we are talking about in a sentence. So now look at here. For example, as I told before, for example, he is okay. For example, he is okay. Another example, she is watching TV. She is watching TV. Now look at here. He is okay. In the first sentence, we are talking about only the condition. But whom we are talking about? We are talking about he. Although he does not do any action, वो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन हम he के मुताबिक बात कर रहे हैं। यहां पर she is watching TV, वो टीवी देख रही है, टेलीविजन देख रही है। तो यहां पर हम किसके मुताबिक बात कर रहे हैं? यहां पर हम she के मुताबिक बात करते हैं, ठीक है। Another example, orally I will tell you. For example, I am in नौशहरा, मैं नौशहरा में हूँ। आप किधर हो? मैं नौशहरा में हूँ। आप कहाँ पर हो? मैं नौशहरा में हूँ। मैं पेशावर में हूँ। मैं चारसदा में नौशहरा, मैं पेशावर वहाँ पर हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जिस्टेंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मौजूदगी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ। किसके मुतालिक बात हो रही है? मैं, it is all subject. I'm talking about myself. I want to talk about my existence. I do not do any action here. I'm just talking about the existence. So this is the complete definition of the subject, the part of the sentence about what or whom we are talking about, in the sentence. The part of the sentence about what or whom we are talking about in a sentence. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ here comes the bus, here comes the bus, यहाँ पर बस आता है। Now look at here, another question is very important. Sometimes the subject can also come at the end of the sentence. This is not compulsory, this is not important, that it always comes in the mid or in the start of the sentence. Sometimes it comes. Here comes the bus. So what we are talking about? What we are talking about here? Bus. No, this is the subject of the sentence. Are you getting the point? तो ये था हमारा आज का क्लास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सके। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।